Am I visible, audible? Okay, thank you so much. So welcome to Sampurna once more. And it is actually a very, very special occasion and very special Sampurna for all of us. I know you are waiting to meet the personality of the day, but I have very beautiful song, so I don't want to listen to it. We all heard it, but आज मन है सुनने का. Let's listen together. Our guest is waiting in the waiting room. Let them keep waiting. That's why it's called waiting room. If they don't wait in the waiting room, there is a point it's calling as waiting room. So it should have the meaning. So let's listen. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, सुना So this song is dedicated to a very, very special person, and I think if that person is there in my life, I don't need anybody in my life. I get everything from that one relationship, and somehow today I wanted to dedicate this song exclusively for that one exclusive person who means everything to me. That's me. If I am for myself, I don't need anybody in life. And I have understood this: when I am for myself, everybody will be with me, including my God. अगर मैं अपना हाथ अपने सर पे रखने को तैयार हूं, तो वो भी उसका हाथ मेरे सर पे रखने को तैयार है. ये मैं जान गया. अगर मैं खुद से प्यार करने को तैयार हो गया हूं, तो दुनिया का हर बंदा मुझसे प्यार करना चाहेगा, ये भी मैं समझ गया. अगर मैं खुद के साथ खुश रहना सीख जाता हूँ,
या मैं खुद को खुश करना मुझे आता है, तो हर इंसान मुझसे खुशी पाने की और मुझको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। ये भी मैं जान गया। इफ आई कैन बी फॉर माई सेल्फ, एवरीबडी विल बी विथ मी, बट इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ, with myself, by myself, even if the whole world is with me, including my God, I'm still not there, right? मैं हूं तो मुझे और फिर क्या चाहिए? If you can be for yourself, everything will come for you. If you can't be for yourself, even if the whole world and the people are with you, you're still not with anybody, including yourself. This song was exclusively dedicated to a very special person, that's me, to myself. Before you come to any kind of opinions and conclusions, I'm a very selfish person, very selfish person. पहले मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, फिर सबको प्यार करता हूँ. पहले मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, फिर सबको खुश रखता हूँ. पहले मैं खुद ग्रो करता हूँ, फिर सबको ग्रो करने में हेल्प करता हूँ. पहले मैं खुद कमाता हूँ और लोगों को हेल्प करता हूँ कमाने के लिए. मैं बहुत सेल्फिश हूँ. मैं महावीर स्वामी का बड़ा भक्त हूँ. तो महावीर स्वामी ने बताया, फर्स्ट यू लिव एंड ऑल्सो अलाउ पीपल टू लिव. So first I live and then I also help people to live. So I'm a very pure, perfect, nice, good Jain by those lines and those understandings. So this one song was purely, exclusively dedicated to myself, and I allow you to also dedicate this to yourself. कभी कर लेना एक बार खुद हो कि लगना चाहिए खुद को, यार सही है यार, मैं हूं तो फिर और क्या चाहिए. क्योंकि even somebody feeds the food to you, चू तो आपको ही करना है ना. चू तो आपको ही करना है ना. अभी ये इंग्लिश वाला च्यू है, अब डोंट मिसअंडरस्टैंड एनीवेयर प्लीज. चू तो आपको करना है. इफ यू कांट चू देन यू चू. सो अगर कोई आपको मुंह में निवाला भी डाल दे तो चबाना तो आपको ही है ना अल्टीमेटली. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू कैन बी फॉर योरसेल्फ, एवरीबॉडी विल बी फॉर यू. With that understanding, let's get into tonight's beautiful, complete, holistic program, Sampurna. And we have a very beautiful guest. All of you, almost all of you know the guest like you cannot miss their presence also, absence also, and it's always made felt their presence by our amazing, huge personality. I strongly believe some people have such a big heart, and the only way to keep that big heart, they need to be given big body. And here we have somebody with such a big heart, and it only suits to her the way she carries herself. So get ready for the guest of honor, uncommon story of a common man. Here we go for this after this introduction. Stay tuned. Yes, my dear ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome the big woman with big heart, Kanchan Bihani. Thank you so much. आपको उधर नहीं देखना, आपको वो कैमरा है ना, वहाँ देखना. Now you will know how difficult is my job to see there, which is nothing. Yes. So here we have Kanchan, and I think almost all of you have seen her, been with her, and her laughter, her happiness, everything is very contagious. Somebody who is high on empathy, everything. Well, as a person, we have known her. As a business person, as somebody who has grown into what she is, and that's the whole idea of today's Sampurna. That part, I think none of you, not even one of you on that side, even know the story of what we are going to unfold today. I think the way I have seen her growing in last all these years, looks like we will have part 1, part 2, part 3, or maybe, don't know, we'll see. And it's going to be very, in fact, the question which is coming to my mind is a very negative tone. Very negative connotation is added to that whole thing. But I think there is no better question to ask to start this whole Sampurna, the guest of honor of this Sampurna. बड़ा अजीब मस्त क्वेश्चन है वो, बड़ा मजा आ रहा है सोच के मैं ऐसे बोलूँ कैसे बोलूँ उसको. She turned 57 2 days back on 15th of today's 18th, so 3 days back she turned 57. सन 57 की पैदा चाहिए, तो 57 साल हो गए इसका. 57th year is what she is.
57th year is somewhere people start consolidating in life. They start, going back to the roots, relaxing, peace of mind, man ki shanti, ashram, Guruji. This is what basically happens at 57. And when I met her, we'll discuss all these things. But the whole excitement is this. 2 years back, 2.5 years back, some kida bit her and she decided to get into business. So with the name, by the name Formax, she formulated one simple so-called workshop in small by-lanes of her husband's factory and office where he was doing and her son was also doing some business. She took them a small place of 400 square feet with, I think, few 10, 12, 15 members. With 6 people, 400 square feet. She started 2.5 years back, and hold your heart, numbers are crazy. And just 2.5 years later, she's moving into a 25,000 square feet workplace with over 300 people whom she's going to give job and going to give employment, and 300 families is what she's going to take care of. It's just a matter of 2.5 years. That's the story, because this excites all of us. Because there are people for 10 years, they have 14 employees and they retire with 14 employees. Even the employees also retire, and employees also retire the same number. And here at 55, somebody decides to start something in just 400 square feet with 6 people. And 2 years later, they are right now moved into a 25,000 square feet with 300 people working, 300 families. Responsibility has been taken by one woman. So here is this Kanchan for all of you. मेरे को पहला क्वेश्चन पूछना है, जब 55 साल में ये सब हुआ, और आप क्या सोच रहे थे? आपके दिमाग में ऐसा क्या खिचड़ी पक रहा था कि ये ऐसे कैसे सोच लिया आपने? नहीं, ऐसा लग रहा था दीपक, उम्र कभी ऐसे एज कभी सोचा ही नहीं था। आपके साथ रह के कभी लगा ही नहीं एज कोई है। Is she audible to all of you? तो और ये जैसा कोई फैक्ट्री में लगता नहीं है जो कुछ है ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता था दीपक, हमेशा मेरे दिल में ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी हाउ आई यूज़फुल टू माई सेल्फ एंड हाउ आई यूज़फुल टू अदर्स, ये मेरा हमेशा रहता था। मेरे को लगता था मैं कैसे किसी के लिए कुछ कर सकूं, तो ये मेरा हमेशा था, कैसे मैं जनरेट कर सकती हूँ एम्प्लॉयमेंट टू द सोसाइटी। ये मेरा मन का हमेशा एक डिजायर था दीपक, एस्पिरेशन बोल दिया। तो ऐसा आपको ये समझने के लिए 55 साल क्यों लग गए? दीपक, काम करती थी मैं, एक सपोर्टिव रोल इस हिसाब से करती थी दीपक। तो मुझे आज भी याद है, कोविड के पहले मेरा कैबिन भी था ऑफिस के अंदर। आपने एक दिन आए थे, आके ऐसे ही बोले थे, आर यू वर्दी ऑफ दिस कैबिन? दैट रियली हिट मी दीपक। This I want to intervene. This one stupid thing which I keep doing, no, actually changes lives of people. Those who take this comments of mine very positively grow from. So let me tell you other number also. So 55, 2 years back when she started, her turnover was 1 crore, and today she does 10 crores. So in just 2 years time, her business is multiplied 10 times. And for what? Simply one day I entered into her cabin and asked, are you worthy of this chair? It looks, and she was sitting in a chair of an HR of a 60 crores company that time. And I चुप के मैं बोल दिया, are you worthy of this chair? अब ऐसा कौन बोलता है? Somebody would have been very ego involved and say, तुम कैसे बोल सकता है? How can Deepak come and talk? Sometimes when I say something like that, ना बुरा मत मान लिया करो, आपका अच्छा ही होता है। देखो ऐसा बोल दिया, बोलते बोलते 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया भाई। अभी 30-300 लोग आएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 करोड़, more than that. So another maybe 2 years, the kind of 300 employee means आराम से 100 करोड़ किधर नहीं गया 2 साल के अंदर में। So it's okay. So sometime when I ask few of you, ये जो कर रहा है बकवास कुछ अच्छा है क्या, फायदा है क्या, कुछ भी बोलता हूँ ना मैं, don't take to heart, don't feel so bad about it. Take it in a right way, take it as a feedback, take it as a कि लाइफ ने कुछ मेरे थ्रू कुछ भेजा आपके अच्छे के लिए, सुन लिया करो, जरा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है फालतू। few of you ना, sometimes I feel really. Actually, I always tell that day if Swami Paramhansa, Ramakrishna Paramhansa would not have kicked Narendra, he wouldn't have become Swami Vivekananda. He took it in a positive and got enlightened. Please, when you take something from your teacher, from your guru, no, take it in a positive sense as a feedback. Jo bhi hai, even if you don't like it, and one transformation can happen. This is how it happens. Please continue. तो जब आपने बोला दीपक, रियली हिट में दीपक, सपोर्टिव रोल के हिसाब से काम करती थी, यहाँ कुछ कन्वीनियंस स्टोर संभालती थी, HR देखी थी, एडमिन देखी थी, पर मुझे ऐसा लगता था
क्या मैं अकेले कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जो मैं कर पाऊँ। तो उसी से मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे मोटिवेशन मिला और स्टार्टेड दीपक। स्मॉल थिंग्स से एक्चुअली कोविड के समय बेटा आके बोला मम्मी कैन यू इसमें स्टार्ट एक हेड बैंड दिखाया मुझे। मैं बिल्कुल लेमैन थी, मुझे स्टिचिंग का कोई नॉलेज नहीं था, पर वो बार बार बोलने लग गया कैन यू मेक दिस, तो मन में आया यस आई कैन डू इट। और उसी से मेरे को मिला दीपक। मुझे एक ही चीज़ लगता है, आपके अंदर अगर कन्विक्शन रहता है और आपको सचमुच कोई ऐसा एस्पिरेशन रहता है, अगर आप एक कदम चलते हो तो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है 10 कदम चलने का। तो मैंने जब पहला कदम रखा दीपक, धीरे धीरे स्लोली कहाँ से कैसे आके सारे आदमी की कनेक्टिविटी मिली, तो ये मुझे बहुत लगा दीपक। ऐसे ही मैं स्लोली करके आगे बढ़ रही हूँ। स्लोली का मतलब क्या होता है? दो साल के अंदर इतना स्लो चल के 6 लोग के 300 लोग, ये स्लोली कैसे बोल सकते हैं? मुझे समझ में नहीं है इन लोग के डेफिनेशन क्या होता है। And the problem with the women is you can't take women whatever they say that they don't mean that. It is what I have been told. तो मुझे समझ में स्लोली का मतलब, वो सोचो स्लोली चलते 6 लोग का 300 हो गया, फास्ट चलती तो क्या होता था? मतलब हम लोग को तो चांस नहीं था उसको मिलने का। ठीक है, प्लीज गो स्लोली ओनली, मैं इतना फास्ट भी मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। So when you started at 55, तब 55 में क्या होता है ना, people become now you are going to become grandmother in some time. Yes. So by 55, 60 के इसमें लोग आदमी ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती में खेलना है, दिस इज व्हाट थॉट्स कम। तो आपको ऐसा डर लगा नहीं क्या कि मैं 55 में बिजनेस शुरू कर रही हूँ, कोई कुछ बोल देगा? फैमिली होती है ना बोलने के लिए, तो वो वेट ही करते हैं भी, कुछ उनके पास काम तो है नहीं, तो देखते रहे कौन कुछ कर रहा है क्या नहीं। तो डर लगा नहीं आपको कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था, फैमिली का सपोर्ट बहुत था दीपक। ऑब्वियसली विजय का बहुत बड़ा सपोर्ट था ऑलवेज। बिगिनिंग से जब मैरिज होके आई तब से स्मॉल वर्क देके मुझे काम करते थे। आई एम नॉट ए, मेरा बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट होके पास करके आई थी मैं, पर स्लोली मुझे हिम्मत देते थे और उसी हिम्मत से मैं आगे बढ़ी हूँ दीपक। फैमिली ऑलवेज सपोर्ट किया, मेरा बेटा भी बहुत किया मुझे, तो ये कभी नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हुई दीपक। आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दीपक। तो मुझे वो डर लगता नहीं कि अगर मैं अभी फैमिली का पैसा लगाऊंगी, उनसे पूछूंगी पैसे के लिए, इन्वेस्ट करूंगी? मैंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया है, एंड मेरा हस्बैंड भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बेटा भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और मैं तो चुपके भी कर रही हूँ। अगर नुकसान हो गया तो पैसे डूब गया तो ये लोगों का बड़ा थॉट आते रहते हैं ना, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि आपको? नहीं, ऐसे थॉट आता ही नहीं है दीपक, आता कभी ही नहीं है भी कभी? ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हमेशा लगा हमारे को तो लोगों को बहुत थॉट आता है, शुरू होने के पहले हम बंद कर देते हैं। ऐसा थॉट कभी आया ही नहीं दीपक नेगेटिव में। क्या होगा, आप तो बोलते हैं ना डंकी का स्टोरी है ना आपका, हम तो गधे हैं और क्या होगा। नहीं, पर ऐसा सोच लेके करेंगे तो हमें तक नेगेटिविटी ही आएगा हमारे अंदर, एक पॉजिटिविटी लेके ही काम किए दीपक। और आई थिंक वही सोच अच्छा लगा दीपक। और अभी जैसे मैं 7,000 स्क्वायर फीट की जगह है मेरा, पर दीपक जब आपके फर्स्ट बिजनेस क्लास में मैंने गई थी दीपक, आपने फर्स्ट क्लास में एक लिटरली मेरे अंदर बहुत चेंजेस फील की, जो थिंक बिग फील बिग। और उसी समय मेरे आके ही मुझे ऐसा लगा आई हैव टू सर्च बिगर प्लेस। तो मैं इधर उधर ऑनलाइन कहाँ बहुत ढूंढा दीपक, और लास्ट में मुझे मिल गया दीपक। कोई एजेंट नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं, कोई एक बंदा आके बोला ऐसा है, तो ये प्लेस मुझे 25,000 स्क्वायर फीट का मिल गया। तो आप अगर बिग सोचोगे और थिंग्स फील करोगे, डेफिनेटली होगा दीपक। आई थिंक आपका फर्स्ट बिजनेस क्लास में ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था दीपक, वसूल कर लिया पूरा हासिल कर लिया लिटरली दीपक। This time joined number one businessman, and in the first session we are discussing about mental bandwidth. ये मेंटल बैंडविड्थ होता है ना, तो जितना आपका बैंडविड्थ है, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी या उतनी ही छोटी या उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी होती है जितना आपका मेंटल बैंडविड्थ होता है। और जितना मेंटल बैंडविड्थ बढ़ेगा, जैसे हम लोग when we see something, few things we cannot see from with the naked eyes, we need to see through microscope, but there are things which we cannot see, there are things which are too far, only through telescope we see. So telescope and microscope क्या करता है, हम लोग का जो देखने का बैंडविड्थ होता है ना, वो बड़ा कर देता है, विजुअल बैंडविड्थ बड़ा करता है। लाइक दैट माइंड का भी एक बैंडविड्थ होता है, और जिसका जितना बैंडविड्थ होता है उतना ही वो आदमी काम कर सकता है या उतना ही उसको मिलता है। लाइक वी ऑलवेज से लाइफ विल फिल द वेसल दैट यू कैरी, व्हाट वेसल यू कैरी। तो ये है, लेकिन एक ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मेंटल बैंडविड्थ की ऐसी कि यू कैन एक्सपैंड योर मेंटल बैंडविड्थ, और इफ यू डोंट लिव इन ए राइट एनवायरमेंट, it can also shrink your mental bandwidth. So your progress or your
suffering all depends upon your mental bandwidth. आप कितना सोचते हो. How to expand mental bandwidth is to be in discomfort. आप जितना discomfort में जाते हो उतना आपका mental bandwidth बढ़ता है. जितना आप comfort में रहते हो उतना आपका mental bandwidth उतना का उतना ही रहता है. So the one idea of taking most all of you in nature in wandering monks or top of the world is एक पॉइंट तक आप कंफर्टेबल होते हो क्लिफ के ऊपर या पहाड़ के ऊपर. देन आई ऑलवेज आस्क यू, आपका जो डर है वहां तक जाओ, फिर उसके आगे एक स्टेप लो, गो इनटू योर फियर, दैट इज डिस्कम्फर्ट टू यू. दैट डिस्कम्फर्ट नॉट ओनली ओवरकम्स योर फियर, इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर मेंटल बैंडविड्थ. कि मैं वहां तक जा सकता था, अब मैं थोड़ा आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. द मोमेंट यू गो बियॉन्ड योर फियर्स, बियॉन्ड योर डिस्कम्फर्ट्स, your bandwidth starts expanding. So the more and more you choose to be in discomfort by choice, your bandwidth increases. That's what basically we discussed in that session. So then she realized कि उसके लिए I have to go in little more bigger place. I should feel that discomfort and let me think about कि यार मुझे बड़ा जगह चाहिए. From 7,000 to 25,000 she moved just in a matter of 1 month or so. That is mental bandwidth. What's a mental bandwidth? Few people, for example, somebody can absorb the loss of 1 lakh and that doesn't disturb them. Somebody can absorb a loss of 10 lakhs, somebody 1 crore, somebody 10 crores. That does not mean 10 crores is big or small. It only means they have the bandwidth to digest that loss. Similarly, few people break at 1 lakh rupee. Some people break at 10 lakhs, somebody at 1 crore, somebody at 10 crores, somebody maybe at 100 crores. That is your breaking point. Which means you have not increased your mental bandwidth. लोग बोलते हैं think big, think big, think big, but that day I realized in the number 1 business session, and I really feel sometimes so many of you here are businessmen and you choose not to be number 1 businessman for your own comforts, which I don't agree at all. There is one thing I realized. थिंक बिग बराबर है, बट हाउ टू थिंक बिग ये हमको समझ में नहीं आता है. एंड इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग बिग. 1,000 करोड़ सोच लिया, बट इट डजंट हैपन. नो, 10,000 करोड़ सोच लिया, थिंक दीपक आई एम थिंकिंग बिग, तो क्यों नहीं हो रहा है? नो, इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग बिग, इट्स अबाउट फीलिंग बिग. एंड फॉर फीलिंग बिग यू हैव टू फील, उसके लिए आपको करना पड़ता है. थिंकिंग प्लस डूइंग इज इक्वल टू फीलिंग, इज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट बिजनेसमैन प्रोग्राम. ओनली फीलिंग नहीं आता, हर एक को वो फील नहीं आता है. तो हाउ टू गेट द फील? थिंकिंग प्लस डूइंग. जो आप सोच रहे हैं उसको आप करो भी तो फीलिंग आ जाए. द डे दैट फीलिंग कम्स यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट इट इन योर लाइफ. जस्ट थिंकिंग से कुछ नहीं होता है. So mental bandwidth is very, very important for anybody. I think it's not only from the business perspective, even in relationship perspective. How much pain can you tolerate? How much discomfort can you tolerate in a relationship? How much happiness can you feel in your relationship? Because few people are very happy with whatever is happening, just caring for each other. They think it's love. No, that is a small bandwidth. You can actually go over the board to make other person feel special by doing 100 crazy things, and that mental bandwidth of emotions also can be increased. I think it applies everywhere. I think that's the most, and that's again this uncommon story of common man जो हम लेते हैं session. It's again a very discomfort because neither I know what question I'm going to ask, nor the guest knows what question will come. So everything is impromptu. So everything comes from the heart. Nothing is manipulated. It's discomfort for the guest also and for me also, because and that's how the mind expands. The more and more you push yourself in discomfort. I think that's what the idea of mental bandwidth we discussed in that one session of Navaram Management. Thank you for mentioning about it. दूसरा एक चीज और है ना कि वो दिस जेंडर बाय, हम कितना भी बोलो आदमी औरत जेंडर इक्वालिटी, तो ऐसा लगता नहीं क्या कि औरत है, शी इज ए वुमेन, फिर इन द फैक्ट्री में सो मेनी मेन विल बी देयर टू वर्क अंडर ए वुमेन बॉस, ये सब आता ही है. फिर समटाइम फैमिली के लोग भी बोलते हैं क्यों जरूरत नहीं है. देयर आर टू क्वेश्चन. एक तो इज ए वुमेन होने का आपको बिजनेस जब करते हो तो उसका फायदा होता है कि घाटा होता है? पहले वो बात करें. नंबर 2 में बोलिए. नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ दीपक, जेंडर कभी ऐसा लगा नहीं.
बिगिनिंग से ऐसे कोई वो भी नहीं था कि भी कोई जेंडर से कुछ मुझे दिक्कत होती है, और ऑलवेज जैसे आपने नहीं, दिक्कत आपको नहीं होती, लोगों को होती रहेगी ना। हाँ, ये कहाँ से आंटी आ गई सडनली? नहीं ऐसा नहीं है दीपक, ऐसा फील नहीं होता है। मैं उससे रिलेट ही नहीं करती हूँ दीपक, जिससे भी एज ए ह्यूमन रिलेट करती हूँ, जेंडर नहीं है उसके लिए, ना लड़की ना लड़का, एज ए ह्यूमन आई शुड रिलेट विद देम। तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ इस तरह की दिक्कत। लोगों ने भी कभी फील नहीं कराया आपको? नहीं, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ दीपक, कोई कराया भी है। This is very important point for all of you. If you don't have these thoughts, no, it doesn't occur to you also, and to anybody also, it doesn't bother you. Only when you have gender inequality in your mind, no, then only think, are men looking at me like that, women looking at me like that? So ये सब अंदर, so like we say ना, everything, world is only a stimuli, everything is within. अगर आपके अंदर कोई discrimination नहीं है ना, तो ना आपको बाहर दिखता है ना बाहर वाले को आप में दिखता है. इट्स वेरी सिंपल, क्लियर लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, एज बिलो एज अबव. इनसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड इज प्योरली रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड. तो जब ये बोल रही कि मेरे को तो कभी लगा नहीं ऐसा, लोगों को भी कभी लगा नहीं, क्यों? अंदर दिमाग में है ही नहीं, है कीड़ा ही नहीं है ना कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में. जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उन्हीं को लगता है कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं. It has never bothered me as an individual what people think about me, because I never think about anybody. मतलब वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं कभी इसमें ध्यान ही नहीं दिया. तो दिस आई थिंक अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. इसमें कोई बड़ा बात नहीं है. चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, अच्छों को सारे अच्छे नजर आते हैं, बुरों को सारे बुरे नजर आते हैं. आपको जो दिखता है ना इतनी बड़ी दुनिया में, all that is visible, what you end up seeing is what spectacles you are wearing inside. That speaks about you. आप जो देख रहे हो वो दुनिया को आप क्या हो ये दिखाता है. आई रिपीट, आप जो देख रहे हो वो दुनिया को दिखाता है कि आप क्या हो. तो when she says I don't see any gender inequality, आदमी भी लोग काम करते हैं, औरत लोग भी काम करते हैं, मैं तो उनको इंसान की तरह इनसे मैं रिलेट करती हूँ. आई डोंट रिलेट विद देम कि वो मैन है वुमेन है. और जब मैंने आस्क कर कि फिर वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि भैया औरत बॉस है, तो ऐसा तो कभी वो लगा ही नहीं कि वो उनको लगता है कि मैं औरत हूँ या वो है. तो विच मीन्स इट्स समथिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नो. इफ यू डोंट हैव इनसाइट, यू वोंट सी इट आउटसाइड. इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. So it is a reflection. The world is only a mirror to you. So when I end up seeing good in everything, that does not mean there is good outside. It only means there is good inside. When I end up seeing all the bad in the outside world, that does not mean there is no good outside. There is only bad inside me. So I'm only able to see the bad thing. It's a very simple understanding. इसमें कोई rocket science नहीं है. I think it's a very valid point what she said. भले ही interview context कुछ भी हो, lessons are important. That always keeps giving all of us clarity. I think it's a very beautiful quality you have, that आप सबको एक नजर देखते हो, आदमी औरत में फर्क नहीं करते हो. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम लोग ज्यादातर चीजें जरूरत होती तो करते हैं. Your husband is successful businessman. Your son, her son Kanchan Bihani is Forbes under 30. So he's India's Forbes under 30, and his youngest. In fact, the uncommon story of common man in December would have been her son, because he was also nominated by Economic Times of India for कौन सा था वो, bootstrap startup of India. And then वो आगे कुछ बात बढ़ी नहीं, तो we just dropped, and then I got involved with something else. Otherwise, before her, Pallav would have been sitting, and we would have seen a 27-year-old Forbes under 30. And boy has recently bought Mercedes-Benz G-Wagon worth 3 crores to drive alone at 27. I think it's commendable. Very soon I'll get him on the Sampurna Uncommon Story. And yesterday's cricket match, if you have seen Bangalore's match, India versus Afghanistan, his brand Bold Fit was launched. Yes, the first debut campaign of Bold Fit was there in all the hoardings mein bolo ya jo bhi, those lightings, everything is been done on the screen. Bold Fit is the brand of her son. So your son also a very successful, rich husband, और successful, rich, सब कुछ तो है. तो जरूरत तो कुछ चीज करने की नहीं है ना. जरूरत होती है ना. नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन.
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक पान छोड़ दो हम लोग के लिए, कैसा गेस्ट है, 5 लाख रुपये तो खा ही जा रहा है नॉन स्टॉप। बाकी लोगों को ध्यान होना चाहिए ना, गेस्ट ऑफ ऑनर हो, गेस्ट ऑफ ईटिंग नहीं है आप लोग, वेट करो नो, नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, ऑल पॉसिबल लग्जरीज भी घर में है, फिर क्या जरूरत है? तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? नहीं दीपक, मनी मनी एक फ्रीडम देता है दीपक लाइफ में। तो तुम्हारा हस्बैंड आपको पैसे देता नहीं हाँ है? जरूर देता है दीपक, पर आज हम किसी के लिए कुछ करने चाहते हैं दीपक, मैं अपने बलबूते करूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। मनी गिव्स मी फ्रीडम। आज मैं नॉट ओनली, आज मेरे को ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है दीपक, मुझे सब कुछ आता है। स्टिल मुझे ऐसे, मुझे मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे बहुत मन करता है मेरे एम्प्लॉयज़ के बच्चे लोग को मैं कुछ कराऊँ, उनके स्टडी में, पढ़ाई में, हर चीज़ का मुझे है। मैं क्यों मांग के करूँ दीपक, मुझे एक आइडेंटिटी भी देती है, ये मुझे अच्छा लगता है फील जी, मैं काम करूँ, ये काम करना अच्छा लगता है। तो अपने बलबूते कुछ करना मज़ा आता है दीपक, क्यों मैं मांग के करूँ, पल्लव मुझे दे, मैं इसके लिए करना चाहता हूँ, विजय दो। आई डोंट लव लाइक दिस दीपक, आई वांट टू डू बाय माई सेल्फ। जब मेरे पास कैपेसिटी है, व्हाई शुड नॉट आई डू बाय मी। तो अब बाकी के अभी आप देखते हो कितने सारे लेडीज है आपके जैसे, आपसे बड़े स्मार्ट भी आपकी उम्र के, वो तो कुछ नहीं करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है दीपक, क्या अपनी अपनी सोच है, क्या बोलो दीपक। तो उनको पसंद है अपने पति से पैसा मांगना, बेटे से पैसा मांगना, आपको पसंद नहीं है? सबके लाइफ के गोल्स अलग अलग होते हैं ना, मोटिव अलग अलग होते हैं, तो पता नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हमेशा था मैं एम्प्लॉयमेंट दूँ सोसाइटी में, तो ये मेरा बचपन से था दीपक। मैं जब मैं 10th में पढ़ती थी, मुझे ऐसा एक हमेशा ड्रीम में आता था, बहुत आदमी के साथ मैं काम कर रही हूँ, पता नहीं कभी सोचा नहीं था ऐसा ड्रीम होगा कंप्लीट मेरा। आज मैं जब मेरे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है एक्चुअली ऐसे ही था, जब मैं चलूँ, बहुत आदमी काम करे, आई थिंक वो ड्रीम मेरा पूरा होने जाने वाला है दीपक, हो रहा है ये। तो ये एक सबकॉन्शियस ड्रीम है जो अभी सचमुच ट्रू हो रहा है। मुझे लगता है एक्चुअली मन की जो मेरी थी ना, वो पूरी हो रही है मेरी ये चीज़। अभी बैंक में अच्छा बैलेंस है? हाँ दीपक, बैंक में बैलेंस है अपना, वो भी है दीपक मेरे पास। मैं जब काम करती थी, जब विजय मुझे काम कराते थे दीपक, तब मेरे को एक सैलरी पे होता था, छोटा सा सैलरी देते थे। छोटा सा? हाँ स्मॉल अमाउंट। इतने बड़े आदमी को छोटा सा सैलरी? तब तो दीपक छोटा अमाउंट कितना होता था, आज 94 की बात है, तो छोटा मोटा काम करती थी तो पैसा देते थे। तो मैं जिंदगी में दीपक पैसा को इन्वेस्ट को हमेशा सेव करके रखती थी। अपनी 9 इयर्स तक दीपक मैं एक प्रॉपर्टी ले ली थी उस समय, ऑफिस को जमा करती थी, पैसा को करते करते एक EMI जैसा था, पे करती थी। तो आज मेरे पास ऑफिस भी है कनिंगम रोड में, बहुत अच्छा, मैं रेंट भी आता रहता है। तो नथिंग जे पहले कुछ बहुत सारा की हूँ बोल के आज काफी चीज अपने आप आ रहा है दीपक। तो अभी जैसे भी मेरे को मालूम है आपका बैकग्राउंड कि आप कोलकाता से आए हो, और ऐसा कोई बहुत अच्छा इंग्लिश भी ऐसा नहीं, अपना ये नहीं है, अपने वो टिपिकल ठोक ठाक के गांव वाले जैसे अपन वैसे आए हुए हैं। तो फिर ये सब होने के लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कॉम्प्लेक्स कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, हाउ विल आई डू बिजनेस, आई हैव टू टॉक टू सो मेनी बिजनेसमैन एंड ऑल ऑफ देम विल बी लाइक हाई सोसाइटी पॉश ये वो, अपने को तो सिंपल सा लाइफ है आपका, मतलब जैसे बड़े हुए हैं। तो ऐसा कभी वो कॉम्प्लेक्स कभी आता है क्या आपको? देखिए ऐसा है दीपक, काम के समय दीपक मैं बहुत बढ़िया अकाउंट्स में नहीं हूँ, किंतु समझती हूँ अकाउंट्स को। आई हायर ए अकाउंटेंट। मैं एक्सेल में बहुत अच्छी नहीं हूँ, आई हायर्ड एक्सेल गाई दीपक। तो ऐसा नहीं है दीपक, आदमी हायर कर सकते हैं, बट ओवरऑल मैं बिजनेस समझती हूँ, एग्जीक्यूशन करना, कैसे पीपल मैनेजमेंट करना, वो मेरे कंट्रोल में। लैंग्वेज नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है जो थोड़ा बहुत चालू इंग्लिश से काम चल जाता है, हिंदी बोल सकती हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ाई करके ही बहुत कुछ कर सकेंगे। अगर आपके पास रहता है आप हायर कर सकते हैं आदमी, यू कैन हायर पीपल। जो अगर लेकिन आपके आप जो हायर करते हो फिर घर से हायर करते हो कि बाहर से हायर करते हो? बाहर से दीपक, अंदर से नहीं कर सकते? अंदर से नहीं करती हूँ दीपक, अंदर में एक इमोशनल हो जाता है दीपक। उसमें क्या होता है, कभी अगर बराबर काम नहीं होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ना करना। बाहर वाले काम करते हैं, ठीक है, नहीं अच्छा लगा, 1 मंथ 2 मंथ रख के सैलरी पे करके हम कर सकते हैं, किंतु घर के आदमी को लेके काम करो ना दीपक, वो बहुत पसंद नहीं होता है मुझे। ये हमारे यहाँ पे काफी लोग हैं जो काफी बिजनेसमैन भी यहाँ पे जब देख रहे हैं, उनको लगता है कि घर के लोग के ट्रस्ट वर्ती होते हैं, बाहर के लोग छोड़ के निकल जाएंगे, तो फिर वो एक्सपेंशन घर के लोग
रखने से एक्सपेंशन होता है कि बाहर के लोग रखने से एक्सपेंशन होता है, कि क्या लगता है आपको? अभी घर के लोगों से कि एक्सपेंशन मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं जो सोचती हूँ बाहर का आदमी से बहुत अच्छे एक्सपेंशन एक्सपेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे आदमी है दीपक। इतने इतने एम्प्लॉयज़ है, इतने बढ़िया बैकग्राउंड से आए हैं, सब अच्छे हैं दीपक। अभी मैंने सुना वो एक फैक्ट्री मैनेजर पूरा Yes. चित्तूर छोड़ के आपके यहाँ पे आ गए रहने के यस लिए। यस दीपक। एंड आई थिंक उनका जो मंथली 1,75,000 सैलरी है, हम पे करना है मुझे। आई थिंक बहुत अच्छा गाई है दीपक। इज प्रोडक्शन हेड है, सारी चीज़ प्रॉफिट लॉस सब, इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, पीपल यू कैन गेट दीपक। मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं क्या? यस, आप जब बोलते हैं ना रोटी देने से कुत्ते आएंगे और मीट देने से लायन आएगा, करेक्ट। तो मीट दिए तो लायन भी आता है दीपक। करेक्ट। तो क्या यू डोंट नीड टू एमबीए टू लो ऑल दिस थिंग्स। ये बंदर का कुत्ता कर दे इसने, लेकिन जो भी बात तो पते की कही है, रोटी पीने से कुत्ता आता है, मीट फेंकेगा तो लायन आता है। शी इज विलिंग टू पे ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 लाख रुपए पर मंथ टू ए फैक्ट्री हेड whom she has almost kidnapped from Tiptur. She went to Tiptur to do visit to find out some material तो लेके नहीं है, बंदे को लेके आ गई पूरा। तो बंदा मटेरियल बनाएगा, अभी वो वहीं पे आके बेचेगा वो। आई थिंक इफ यू आर विलिंग टू ट्रस्ट एंड really hire competent at a worthy price, I think there are a lot of good people available. If she can get people from 6 people to 300 people to work, I think लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो कुछ कुत्ते और शेर की बात कर रही थी, तो याद रखो आप, अपना बोलना पड़ता है। सही है ना? हम आदमी मिलते हैं अच्छे, हाँ, मिलते मिलते बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते बहुत अच्छे मिलते हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। वो तो आप लोग भी करते हो, मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो डू बिजनेस, यू हैव 100 एम्प्लॉइज, 200, 500 एम्प्लॉइज, सब बराबर है। वट इज इम्पोर्टेंट इज, this is especially for all of you, a psychological slap I want to give it to you indirectly, directly. With all these things, she comes for fit spirit 3 days in a week. She makes sure her health is taken care of. She also does yoga practices in the morning with some yoga instructor who comes and teaches. She also do walking every day, and she is very clearly told, ये सब मैं करूँगी, but in this I will not compromise on my travel. I will not compromise on my family. I want to give time to my family. I want to be with my granddaughter is on the way, grandchild is on the way. So I will spend time with my grandchildren also, grandchild also. I also want to go for my spiritual retreats and wandering monks. I also want to move around the world. All this thing I will do, and I will do 10 crores plus. Now I will move towards 100 crores. But all these things will not take away anything from my health. She's most of you here have witnessed this. She's always regular to the health class. She's always regular to her yoga classes, her walkings. She regularly go for a spiritual retreat every year. She regularly come from wandering monks every year. She goes for travel all across the globe along with her husband every year. And with all these things, she does all the money. That's exciting for me. And with all that, she's happy. She sings. She dances. She makes people feel special whenever she's around with people. All this thing happens, and she has tears of gratitude almost every day. She dances out of happiness almost every day. She laughs and makes people laugh like nobody's business almost regularly every day. And I think that's what I call about holistic life. And that's how. ऐसे कैसे कर सकते हो आप? कोई एफर्टलेस हो जाता है दीपक, ऐसा नहीं, सोचता सब कुछ सोच रहे हैं कि ना, अभी हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है कि बिजनेस बहुत प्रेशर हो गया है, फिर एक्सरसाइज नहीं करना है इन लोग को, फिर हेल्थ इतनी बिगड़ गई तो बिजनेस काम पे नहीं जाना उन लोग को, फिर घर में अभी इनकी बहुत शादियाँ हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस शादियाँ कर रहे हैं, फुल टाइम मैरिज में बिजी है, एक्सरसाइज नहीं करना है, मेडिटेशन नहीं करना है, ऑफिस पे गए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कुछ भी करते करते। बट ये तो मैंने कभी देखा नहीं आपके साथ। तो उसके पीछे का कुछ तो सोच तो रहेगा ना, मतलब दिमाग में ये रहेगा ना यार, जैसे भी आई ऑल्सो डू, मैं कुछ भी हो जाए, हाउ मच एवर मिजरेबल अनहेल्थी या हेल्थ इश्यू भी कुछ हो गया, कमिटमेंट भी हो जाए, मेरे फ्यू थिंग्स क्लियर है, ये तो मिस नहीं करना है। जैसे द अदर डे योर आपके समझी डिनर पे घर पे बुलाए थे, एंड दैट डे आई ऑल्सो हैड फिट स्पिरिट, I went there also. I made them also feel comfortable. I came to fit spirit. I again came back to them for desserts. In between, I did also this. Anybody else would have said अभी यहाँ पे घर पे किसी ने बुलाया तो fit spirit नहीं जाना है, मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा हेल्थ है, उसके लिए मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। आफ्टर दैट आई वांट टू बी स्पिरिचुअली, ऐसे मेरे दिमाग में सेट है, देन एवरीथिंग करना। आपके दिमाग में ऐसे कुछ आइडिया है कि इनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ये लोग कुछ लोग को बीमारी पड़ जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं,
एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिलता, इनको बिजनेस के लिए बहुत बिजी होते हैं, तो ट्रैवल करते तो समझ में आता नहीं है। फ्यू ऑफ देम डोंट गो टू हॉलीडेज ओनली फॉर ईयर्स टुगेदर, एंड बड़ा परेशान लोग हैं मेरे यहाँ पे। थोड़ा सा मैसेज डालिए। क्या कर दी फिर मैं तो मेरे हेल्थ में ये सब्जेक्ट में ज़्यादा हेल्थ फिटनेस में बोल नहीं पाती हूँ, बिकॉज आई एम लिटिल स्टिल बहुत ऑब्वियस हूँ। तो इतना होने के बाद आप इतना कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत पतले लोग भी है पर कुछ नहीं करते हैं, है ना, बहुत सारे पतले लोग। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आजू बाजू में बहुत पतले लोग बैठे हुए हैं, मैं भी काफी पतला ही हूँ, एकदम कुछ ज्यादा करते नहीं है। आपकी बात नहीं, आप इतना पतले नहीं होके भी इतना करते, तो वही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करते हो सब? दीपक टाइम एक और पॉइंट है जो आपको वैसे ने बोला था आपके बर्थडे पे, कि अब इतना हेल्थ पे वी आर ऑल सीइंग, अब यू डू सो मच एंड वी सी फॉर लास्ट ऑल दिस इयर्स आपका बॉडी उतना ही थोड़ा प्लस माइनस होता है, इसके बावजूद 57th ईयर ऑफ योर लाइफ एंड यू नो यू हैव डन ऑल पॉसिबल वर्कआउट्स फ्रॉम हेल्थ क्लास टू फिट स्पिरिट टू योगा टू जिम टू क्या क्या नहीं किया रहेगा, डाइटिंग से लेके सारे पॉसिबल फिटनेस के जो भी रेजिम्स है शी हैज डन, एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग एक आदमी एक बार थक जाता है कि यार छोड़ो ना, अभी ऐसी बॉडी है तो रहने दो ना, बट नो, शी स्टिल एवरी टाइम यू सी शी विल बी डूइंग समथिंग फॉर आवर हेल्थ। कभी योगा है तो कभी कुछ बीच में डाइट कर लिया, तो बीच में कोई कुछ थेरेपी कर लिया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आपको ये गिवअप का थॉट नहीं आता कि अभी हो गया ना 57 साल, मतलब 30 साल से मैं इस बॉडी पे मेहनत कर रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो जो गोली मारो भाड़ में जाए ना, तो हमारे काफी लोग छोड़ देते हैं ऐसे बीच में। नहीं दीपक देखिए वजन वेट के लिए कम नहीं हो पा रही, किंतु फिटनेस लेवल होना चाहिए दीपक। आज सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में, फुल डे ऑफिस में काम करती हूँ, हाईली एनर्जेटिक फील करती हूँ थ्रू आउट द डे। टाइम फॉर मी माई सेल्फ, मेरे लिए समय होता है, मेडिटेट करती हूँ, टाइम फॉर माई गॉड। तो सबके लिए यार ये सारे जब सुबह रहती हूँ ना, क्या बोलूँ, अपने आप को एनर्जी तो वहाँ से ही आता है ना भाई। उसके बाद काम करने जाती हूँ फुल डे, शाम को 6 o'clock तक घर आती हूँ, फुल डे एनर्जेटिक दीपक, उसको फिट स्पिरिट जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है दीपक। आज जब से आपका डायना आपके जो फिट स्पिरिट में गई, तब से और एनर्जी लेवल बढ़ गया मेरा दीपक। आई थिंक कभी टायर्ड वर्ड मेरे मेरे डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, आई एम टायर्ड, कभी मैं बोलती नहीं हूँ तो दीपक। ये सब जो बैठा करना के मगर सब करना है, ये सोच कैसे बनाई आपने कि जो भी है, बिकॉज दिस वन थिंग आई हैव सीन, लोगों को सब चीज करने नहीं आता, करने की इच्छा बहुत है कि सब करना है, बट इनसे सब होता नहीं है। आप कैसे मुझको वो आंसर चाहिए, या सोच के बताओ कि हाउ डू यू डू दैट? आप बोल रहे हैं मैं सुबह उठती हूँ सब करती हूँ सब बराबर है, कैसे करते हो ये सब? दीपक इतने साल आपके साथ, आपके टीचिंग के साथ जुड़े ऐसे हुए हैं बहुत दीपक, सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे की बात मैं नहीं तो बोलूँगी। उसलिए बोला वो सब जुड़े हो के भी जुड़े नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ कैसे गया, तो आपने क्या समझा? अब कैसे बोलूं दीपक, अगर हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो दीपक काम कैसे करूंगी। फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ओबीस हूँ, किंतु फिटनेस में मेरे हर काम मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ये ज़रूरी है फिटनेस होना, फिर अभी आप जैसे इतने 16 ईयर्स से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ दीपक, अब कूट कूट में अंदर भर दिए ना दीपक, ये टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम बाकी लोग में खुद को बुझा नहीं लगता, है, सबके अंदर है सबको सबको दीपक। कूटना पड़ेगा अभी, इंक्लूडिंग विजय, तो कूटने की जरूरत पड़ेगी सबको, मतलब कूट कूट के भरना चाहिए ना। कुछ कुछ के नहीं दीपक, आपने इतना कुछ सीखा है दीपक, और आई एम अकाउंटेबल टू यू दीपक। अगर वो नहीं करूँ तो कैसे चलेगा दीपक, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा टाइम अपने साथ, थोड़ा टाइम अपने गॉड के साथ, थोड़ा ये नहीं करूँगी तो एक जब डे एंड होता है लास्ट को अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता है, जब मैंने कुछ नहीं किया तो दिस इज फॉर मी, जब मुझे एक अकम्पलिशमेंट मिलना चाहिए, मुझे अच्छा फील होता है दीपक, यू शुड फील गुड, यस आई हैव गिवन टाइम फॉर एवरीथिंग। अभी अभी लोग 50 के बाद में वेट फुल स्टॉप करो, फुल स्टॉप कहाँ पे करना है, वो टाइम में अपने कॉमा लगा दिया, अभी ये कॉमा के बाद में डॉट डॉट हो गया, डॉट 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 हो गया, अभी गाड़ी रुकेगी कहाँ पे अभी? गाड़ी तो दीपक भगवान जब रुकेगी तभी रुकेगी, गाड़ी चलती रहेगी चलती दीपक, रहेगी। चलती रहेगी। आप तो बोल दिए, अगर मिरर और अगर आपका कैलेंडर नहीं होता, एज और कुछ भी ये सब नहीं दिखता, तो ये क्या है दीपक, चलते रहेंगे। कभी सोचती नहीं हो 57 ईयर्स का, एक्चुअली लास्ट बर्थडे 15 तक तो 56 ही थी, आप ही कहीं कैलकुलेशन करके 57 निकाल दिए हैं। ये एज तो कुछ भी नहीं दीपक, अगर मन के अंदर अगर एज फील कर लेते ना दीपक तो एज होता है।
हर उम्र के आदमी के साथ मस्ती करते हैं, बच्चे के साथ बच्चे, तो कभी फील ही नहीं होता है बड़े बन गए हैं दीपक लाइफ के। Yeah, but I agree with her. The point which I think I have not shared in much of the uh, occasion, but this one thing I want to just put on the record right now. Maybe we'll make let's make a reel of the entire thing is, in this world, if there are two things are not there, we will be very happy and peaceful people all our life. Only two things should be removed from this world. One is mirror, and other is calendar. Mirror tells us how beautiful or ugly we are because of comparison. If we don't see mirror, we will not know how we look or how others look. Doesn't matter to us. And calendar tells us how old we are becoming. If there were no calendars, we won't know our age. And as long as we are feeling excited about health and fitness, we'll always remain young. So calendars reminds us that we are becoming old, so we feel bad. And mirror tells us we are not as good looking as others are, so we feel bad and miserable. Take out these two things, and we have a very beautiful, happy, and peaceful world. Think about it. So I think but I still feel this one. This I'm not able to still comprehend few things. At 55, somebody starts their life and they grow 10 times in 2 years, and then just looking forward to go even more next level is something very, very mind blowing. We don't know where this juggernaut is going to stop, or it is going to continue and build a legacy much beyond. In fact, I was talking to her husband Vijay. Looks like the way she is growing, within few years she will do much bigger business than what you would have done for so many years, and it's going to be crazy. Going to be crazy. Another thing which very beautifully, Vijay is also in the same place sitting next to all of us here. I always have said this, I want to put it back on the record again. I don't know if behind every successful man is there a woman or not. I don't know. Narendra Modi, Atal Bihari Vajpayee, Abdul Kalam, so many of them. They never married, they did not have a woman. बोलने के लिए बोल सकते हैं, जोड़ना हम जोड़ सकते हैं, but truth is ऐसा कोई नहीं है. But I know one thing very clearly, behind every successful woman there has been a man. It can be a father, it can be a husband, it can be a son, it can be a friend, it can be a teacher, it can be a guru. But एक औरत की सक्सेस के पीछे एक आदमी का होना बहुत जरूरी है. So whom do you want to give this credit? Because the truth is, Vijay also is there with you, and Pallav. The entire journey began of Formax with Bullfit. Yes. Pallav ने वो काम दिखाया या बोलो जो दिखाया, and because of that you got into backward integration, and from there you now going into your own brand. आपका स्टोरी बड़ा फास्ट होता है, but you build up your own brand also. तो आपको क्या लगता है आपके सक्सेस के पीछे, या you can't say success, it's still a long way to go, but still I think a small journey, this is the journey, thak se you go 10 times in just the 2.5 years should be put into a bracket of success. तो आपको क्या लगता है आपकी जो जर्नी शुरू हुई है सक्सेस की, उसके पीछे कौन से मर्द का हाथ है, पति का या बेटे का? डेफिनेटली विजय दीपक. क्योंकि विजय सामने बैठा इसलिए नहीं, बोल रहा हूं, नथिंग लाइक दैट दीपक. और पल्लव दिल्ली में इसलिए बोल रहा है? नहीं, विजय डेफिनेटली दीपक. मैं बहुत सिंपल फैमिली, मैंने ऐसा कोई नहीं मेरे परिवार में उसमें कोई काम करता था. बिगिनिंग से जब मैरिज हुआ था उसके ठीक एक फर्स्ट लेटर आया था, मुझे कभी ये देखना नहीं है तुमको, आज ये बृहस्पति थर्सडे इस मंदिर में जाना, कल फ्राइडे संतोषी माता का पूजा करना, आज ये व्रत करना. उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था. वो बोलते थे तुम काम करो, कोई भी काम करो, तुमको अगर अपना काम भी पसंद है वो भी तुम करो, कहीं पे भी जाओ. आई थिंक जो फ्रीडम विजय दिया है दीपक, आई रियली, मैं बोलती हूँ ऐसे हस्बैंड बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं मिला है. नॉट ओनली ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई टीचर ऑल्सो दीपक. आप मेरे हो, किंतु एक मैं बोलूँ सेकंड टीचर विजय है, जिस तरह से मुझे गाइड किया है स्मॉल स्मॉल थिंग्स में. कंप्लीटली विजय के पास जाता है दीपक. ये आपका तो ऐसे है, हम बाकी लोग का माता पिता गुरुदेव है, मैं आपका माता पिता पति गुरुदेव है मैं. दीपक आप तो हमेशा, आप तो दीपक मॉर्निंग होता है आपसे, इवनिंग होता है एंड आपसे दीपक. यू ऑलवेज देयर फॉर. आई एग्री, अगर हस्बैंड को अगर इस ऐसे फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए,
और देखिए दीपक, इतने आदमी के बीच काम करती थी, नेवर कभी ऐसा नहीं दीपक, 30 इयर्स मैरिड लाइफ है, नॉट इतने आदमी से मुझे मीट करना पड़ता था काम में, कभी विजय ने कभी कोई चीज़ के लिए किससे मुलाकात कर रहे हो, किससे क्या, ये फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है दीपक, जो बहुत अच्छा लगता है। आज इसी के वजह से मैं इतना कर पा रही हूँ। I know Vijay never had a problem with you meeting other. He only had a problem कि उसका क्या होगा, इसको आप मिलने वाले हो, उसका बेचारे का क्या होने वाला है, उसी का चिंता थी। आपकी चिंता तो कभी कभी भी नहीं, आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगी। आई थिंक अब एक और चीज मेरे को पूछना है। आई थिंक वी आर टुवर्ड द एंड ऑफ द डिस्कशन हियर। जो लोगों ने बिजनेस में थोड़ा चालू होना बहुत जरूरी है, तिक्रम दिमाग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड हाउ मच एवर वी हैव सीन यू एंड वी हैव नोन यू, आप बहुत अच्छे हो, दिल के भी बहुत अच्छे हो। थोड़ा सा कुछ आपको अच्छा दिख गया तो आपके आंसू आते हैं, थोड़ा सा खराब दिख गया तो आपको आंसू आता है, एंड थोड़ा आपको थोड़ा फील कराते हैं किसी से अच्छा तो और भी अच्छा, और भी ज़्यादा आंसू आते हैं। किसी का भी अच्छा होता है देखते आपको आंसू आते हैं। मतलब आप इतने इमोशनल हो, और बोलते बिजनेस में इतना इमोशन अच्छा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी वेरी बैलेंस्ड, थोड़ा दिमाग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजिक, थोड़ा जुगाड़ू, थोड़ा सा चालूपंदी चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए। और आप एकदम बहुत सीधे, बहुत प्यार से बात करते हो कभी। मतलब आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ अस एवर सीन यू वेरी एंग्री। गुस्सा भी करते हो तो कितना प्यार से बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आप ऐसा नहीं करना, तो उसमें गुस्सा भी दिखता नहीं है। तो ये बिना गुस्से के, बिना जुगाड़ू दिमाग के, बिना मैनिपुलेशन के, बिना चालूपंदी के आप बिजनेस कर रहे हो, और 10 गुना बिजनेस हमने बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक है क्या कि ऐसे हम जब सक्सेस, कैन वी बिकम सक्सेसफुल विद ऑल दिस गुड क्वालिटीज, और वी हैव यस टू बी लिटिल? दीपक, मुझे ऐसा लगता है जे 90% थिंग हमारे लाइफ में इमोशन से लीड करना चाहिए, 10% आता है जहाँ इंटेलिजेंस आपकी ज़रूरत होती है वहाँ काम करना। आज मेरे एम्प्लॉय से जो बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत बड़ी काम करता है दीपक, इसीलिए इतने सालों से उन लोग काम कर रहे हैं। तो इमोशनल बॉन्डिंग कहीं है। और कोई मुझे अगर धोखा देने व कुछ करने आते हैं दीपक, मैं चीज़ों को सोचती हूँ, देखती हूँ, उसी वक्त मैं डिसीजन नहीं लेती हूँ। आई टेक टाइम फॉर, मैं अगर लगता है मुझे बंदा कुछ ऐसे बोल रहा है जो मेरे को लग रहा है थोड़ा कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, आई टेक टाइम, मैं उसी समय डिसीजन नहीं देती हूँ। चलो टू 1 डे बिफोर आफ्टर मिल, एक दिन के बाद मिलेंगे, तो उस वक्त मुझे मालूम हो जाता है जे क्या है क्या चीज़। तो ऐसा नहीं है दीपक जे कोई हमको फूल बना सकते हैं। हाँ, आदमी से काम करती हूँ, टीयर्स भी आता है दीपक, एम्प्लॉयज़ के जब उनके कोई होते हैं एम्पैथी हो, बहुत टीयर्स आता है, फील करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर क्या बोलने चाह रही थी मैं, जस्ट जो बॉन्डिंग जो होता है ना दीपक, इमोशन से बहुत होता है दीपक। और एसर्टिव वे में बात करती हूँ दीपक, कोई गुस्सा होके बात करना ऐसा नहीं है, एसर्टिव वे में फर्म होके बात करती हूँ कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके लिए चिल्ला के गुस्सा करके बोलने की जरूरत नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। मिस्टेक कियो करो, वो कोई एक बार 100 टाइम्स करो, किंतु नॉट रिपीटेड मिस्टेक्स। तो ये असर्टिव वे में मैं बात करती हूँ दीपक। आई थिंक इट्स ओके दीपक, ये अच्छा है। इसमें मुझे किसी को मैं किसी को पेन दूं, फिर इरेक्ट में क्या मिलेगा दीपक? अच्छे से बात करके कोई चीज़ को कंप्लीट करना, यही मुझे लगता है दीपक जी, आदमी के साथ ऐसे लीड करना अच्छा लगता है। Okay, I have lot to ask, but let me ask for this day. I did keep me the final question. जितने को मन कर रहा है, then we will. I think if you want to share something, we'll share. And if you think if you learn something, do share on the entire thing. Comment about the whole thing. आपके पति का बिजनेस बेटा ने अलग तरीके से चालू कर दिया, बेटा संभाल लेगा। आपके बेटे का बिजनेस उसका बेटा संभाल लेगा। आपका बिजनेस कौन संभालेगा आपके बाद? मेरे बाद कभी ये सोचा नहीं दीपक, बट डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ मेरा काम दीपक, बेटा के लिए जरूरत कितना है मुझे मालूम नहीं दीपक, पर मैं सोचती हूँ बेटे का तो खुद का बिजनेस हो गया, खुद का है ये। वो तो जा रहा है अलग लेवल पे ही। आई नेवर थॉट अबाउट दिस, अब ठीक है, एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, कुछ डिफरेंट वे में सोचती हूँ। मुझे बहुत कुछ रिटर्न देना है दीपक जीवन में, मैं जिससे जो कुछ ली हूँ। इसमें बोल जाना इसमें से नहीं, इन्हीं से नहीं, पर बहुत एम्प्लॉयज़ है दीपक मेरे पास। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है दीपक, 25 ईयर से जुड़े हुए हैं, 20 साल से, उनके बच्चे। मैं कुछ रिटर्न देना चाहती हूँ दीपक। मैं चाहती हूँ
मैं आई शुड नाउ माई टाइम रिटर्न बैक टू देम। तो ये मैं हमेशा चाहती हूँ किसी के बहाने कोई भी चीज़ से मेरे एम्प्लॉय को अगर मैं कुछ दे सकूँ दीपक, ये मेरा बहुत सपना है दीपक। आई थिंक एक ड्रीम है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि जैसे भी आपकी उम्र बढ़ जाएगी या थोड़ा सा एक बात के बाद में तो एज तो पकड़ यस लेती है, यस यस। तो उस समय अभी विजय तो आपके बिजनेस में आएगा नहीं, वो अपना अलग चल रहा है। पल्लव का तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है, इज गोइंग इंटरनेशनल ओनली। ही विल बी लाइक हाउ नाइकी एंड हाउ एडिडास एंड हाउ दे आर देयर इन बोल्ड फिट आल्सो विल बी एन इंटरनेशनल ब्रांड इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो वो भी देखेगा नहीं आपका बिजनेस। तो हम मान के चले कि वी विल हैव समबडी अमोंग अस who will have a business which will not be run by the family members, but it will be run by the long serving and the best employees of the Formax, and it will become something like a private limited or public limited प्राइवेट company. लिमिटेड अभी बना हाँ रही वो हूँ तो हो दीपक जाएगा, अभी, बट yes. बाद में it will become something run by the employees, for the employees, by the employees, and it will continue like that. So ऐसा हम सोच सकते हैं क्या कि ना दीपक सोच सकते हैं, मुझे अभी तक मैं सोचा नहीं इस बारे में। डेफिनेटली है वो जो। आपके बेटे ने बोल दिया कि नहीं नहीं वो तुम्हें नाम पे करके जाओ? ऐसा नहीं है दीपक, क्यों बेटा पूछेगा ऐसा? पूछ लिया, अभी इतना बड़ा बिजनेस अभी 10 करोड़ का कर रहे हो, और बाकी हर 2 साल में तुम 1 हाँ to दीपक, 10, अगर 10 ऐसा to करो, 100। ऐसा भी करो तो उसका एक शेयर होल्डर हो सकता है दीपक। वो एक शेयर होल्डर ले लेगा मेरे उसमें से। अच्छा, पर आदमी और भी है दीपक जो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ थॉट काम करेगा उस समय, नॉट ओनली खाली एक ही चीज है वहाँ पे कोई जिसमें। डायरेक्टर का पोस्ट खाली है क्या? हम भी अप्लाई कर देते, क्या मालूम हमारे दीपक को भी कल आपकी शेयर तो, होल्डर मिल जाए। दीपक आपकी तो ब्लेसिंग चाहिए बस 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 दीपक। वही है, ब्लेसिंग भी बस है, आप ब्लेसिंग दे ग्रेटिट्यूड सब आपकी। रहा है। बस शेयर होल्डिंग मत देना, बस ग्रेटिट्यूड दे देना। शेयर but that's nice. I think it's a very good thought to have, even in the thought at least. I know this question they would have never thought. I wanted to ask purposely so that they can start thinking कि विजय तो ये बिजनेस देखेगा नहीं, पल्लव इज बिजी विद बोल्ड फिट, इसको मैं आज लेके, आज 10 करोड़ का कंपनी है, इट विल बिकम 100 करोड़ इन 5 years, तो 100 करोड़ के बाद में, एंड शी ऑल्सो विल कीप ग्रोइंग, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी विल वांट टू कम बैक, और शी वांट टू मे नॉट बी एक्टिवली इन्वॉल्व कंप्लीटली फिजिकली। तो वो टाइम पे फॉर्मैक्स can be formed into a company run by employees, like how L&T is right now been doing, so many companies are there. So एक सोच दिया, एक थॉट दिया इनको सोचने के लिए। Yes. तो देखो इसमें से अगर ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया, we will have somebody among us whose business is run by the employees who served them for all their life, and if it happens it will be a very very proud moment for all of us to know that among us we have somebody who went beyond me, my and my family, because everybody has ultimately stuck with me and my family and nothing else. And we will see somebody from our own fraternity going beyond me, mine, myself, and my family to a world which is not a blood relative, but purely work related and heart related people. And that was a wonderful time I think we had listening to you and whatever we could pick up in this much time. In case you have picked up something from the session today, and we would love to share from, listen to all of you sharing, or as many possible. And I have a very beautiful song dedicated to her, to Formax in the future. Till that I get the music ready. If any one of you want to listen and want to share something, please do raise your hands. Nobody is there? Nobody is there. अब विनोद नाहर, क्या बात है, देखो सबसे महाकरोड़पति आपसे बात करेगा। Hi Vinod, that was nice to see you been attending the Sampurna. Thank you so much. Very, very happy evening, Deepak and Kanchan ji. It's such a honor to be in this call, and listen to you. Of course, Deepak does a great job of bringing out the best, in a very candid conversation like this. But let me very, I want to share certainly that, this session has been very inspiring to me, Kanchan ji. Right, and we met few times in the past, and you have come as a very very loving person. Right, and I was talking to Pinky, my wife, that I'm attending this session, and I showed you a photo, and she said, "Oh, Kanchan ji, that day you met her, and she remembered you, and she said, please convey her regards as well." So one certainly what to talk about is that. And I'm feeling pretty emotional about you, Kanchanji, because the person you are, you're such a down to earth, such a loving person.
and the amount of gratitude you have demonstrated to your guru, right? And I saw that video of yours today, which was shared on Sampurna, and I could see that, what a great person and what a amazing person you are. And I'm so glad and happy to be here and listen to this entire conversation. So thank you so much, Deepak, for bringing this session up. And would love to have, as you mentioned, Deepak, can we have part 1, part 2, part 3? I think you've just scratched the surface of what a great lady she is. And Kanchanji, I would want to see your plant, your warehouse, or your factory, and come there and see you in action. And our motivation leke hum bhi thoda jaake will implement some of that what we learned there. So thank you so much. Yeah, but it's a sight to see when she works with people. इतना प्यार से कोई काम करवाता है ना, my God. मतलब वो अगर हैवान भी रहेगा तो वो भी काम करवा के देगा, इतना प्यार से काम करवाती है. And we keep wondering यार, हम इतना लोगों को देखा है चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गालियां देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है. और बिना गाली दिए एकदम प्यार से मोहब्बत से ऐसा काम करवाती है ना अच्छे अच्छे लोगों से. My God, I think really work we should, or one day we should put one camera there hidden and see her working and pick up, because once we go there she'll become very conscious. But I think they will see, we should definitely go and visit the workplace of her very soon. We will plan something, and I think that one We thing learned also. 3 management lessons today from you. So that thanks for that. It was really profound. At least 2 clear lessons which we learned about from this session. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Yes, Jajorias. Love you, Deepak. Love you, Preetto. Oh, what an amazing session, Deepak. I think हम लोगों ने कंचन जी को जो अभी तक देखा और जो आज से देख रहे हैं, दोनों अलग हो गया, दीपक. मतलब जो अभी विनोद ने जो बोला कि we learned a management lesson. For me, the management lesson what I picked up from her is इतना प्यार से बोल के आप कैसे काम करवा सकते हो. मतलब अगर कोई मेरे से बोले कि यू ड्रीम दैट कंचन जी जो है गुस्सा होके चिल्ला के फ्रस्ट्रेट होके कुछ बोल रही है, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रीम दैट. एंड द वे शी डज एवरीथिंग हम लोगों के सामने. यार मैं और रजनी आज जब सेशन चल रहा था तो हम लोग तुरंत ही बात कर लिए कि कंचन काम कैसे करवाती होगी. एंड यू आस्क दैट क्वेश्चन. इतना प्यार है. मतलब I don't know. I really doubt I have seen anyone with so much of love. इतना प्यार से बोलती है. जैसे इनका जो वर्डिंग्स है, बोलने का तरीका, वो भी स्पॉन्ज के ही जैसा है दीपक, ऐसा लगता है. Too sweet, Deepak. And being you, you have achieved so much. This is something out of the box. We have always heard about Ratan Tata or Narayana Murthy. They have achieved something in their life, but they have achieved what they have achieved being a man in the family, being the one जो कि आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की वैसी जरूरत नहीं है. And what you have done, ये मतलब we have always heard Narayan Murthy talking about कि Infosys is a very well governance company, एथिकली काफी चलता है. रतन टाटा की कंपनी एथिकली चलती है, सब चीज ठीक है. मगर आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जो आपका नेचर है, इसके अंदर तो मैंने अभी तक कोई कंपनी नहीं देखी. छोटी बड़ी छोड़ दीजिए, मैंने कंपनी नहीं देखी है कंचन जी. मतलब हैट्स ऑफ. मेरे को तो लगता है सेकंड और थर्ड सेशन नहीं लेना चाहिए दीपक. इतना अगर एक प्रिंसिपल ले लूं वो काफी है दीपक. कंचन जी, थैंक यू. दिखाने के लिए क्या है, आई थिंक some many time it happens that I get little frustrated और थोड़ा लैंग्वेज टोन खराब हो जाता है एम्प्लॉय के साथ, टीम मेंबर के साथ, नॉट एम्प्लॉय. आई थिंक आपसे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आज मिला है कंचन जी. आई थिंक आई नीड टू बी मच मोर सॉफ्टर इन माय कंडक्ट विद माय पीपल. एंड लव यू कंचन जी, लव यू दीपक. थैंक यू फॉर शोइंग दिस दीपक. हम लोग को कभी नहीं पता चलता और हम लोग आपकी फैक्ट्री देखने आ रहे हैं. Very soon, we all will plan it. We'll have not Pani Puri party, but we'll have some other party, and definitely. Thank you so much for sharing, please. Love you, Deepak. Love you, Kanchan.
Deepak, sorry, thank you so Vinod. just quick, Kanchan ji, just want to wish you, and I trust and I'm sure that you will reach 100 crore very soon. And all our energy, including mine, of course, Deepak's blessings are there with you. We want you to achieve 100 crore soon, and we want to have that party and celebration very, very soon. In Sorry. fact, please complete. Love you, Deepak. Love you, I'm Kanchan. done. I just thought 100 crore का milestone बहुत जरूरी है. So I said कि I want to remind her कि please, call us back in few years, maybe less than 2 years, and say you have done 100 crore, and that will be. We'll not do this virtual. We'll do a physical. Yeah, call. We will do. I'm good at throwing parties like that. You know that, right? In fact, मेरे को ऐसा सोच रहा है, as you said right now कि we can have party bitty. I was thinking right now this new concept has started called pre-wedding party. अभी तो वो चालू हो गया, प्री पोजिशन पार्टी शुरू भी, ऐसे भी कुछ सुना मैंने रिसेंटली. अभी पोजिशन शुरू का पहले पार्टी कर लेते हैं. तो ये प्री वेडिंग पार्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्री वेडिंग पार्टी मीन शादी के पहले शादी की खुशी में पार्टी कर लेते हैं, और उसमें गारंटी नहीं कि शादी होने वाली है, वो तो होएगी तब होएगी. तो ऐसे क्यों नहीं करें कि हम लोग ऐसा दिमाग मान के कि 100 करोड़ तक करना है बंदी को, तो लेट्स हैव प्री 100 करोड़ पार्टी. सो उसका पार्टी दे रहे तो भी झक मार के तो 100 करोड़ करना ही पड़ेगा. शैल वी मेक इट अ कॉन्सेप्ट इन दिस फेटर्निटी ऑफ इंस्पिरेशन वेयर कि अगर जैसे बोलता है कि अभी विनोद हमारा बोलता है कि यार मेरे को भी 2000 करोड़ करना है यार, करना है, वो तो पक्का है, करना है, चलो वी हैव प्री 2000 crore celebration party and we call our people and say all of you are invited to party because मैं 2000 करोड़ करने वाला हूँ. कि शादी करने वाले हो तो तुम पार्टी थ्रो कर रहे हो जब भी शादी हुई नहीं है. तो अगर शादी नहीं हुए भी आप प्री वेडिंग पार्टी दे सकते हो, तो प्री 1000 करोड़ प्री 100 करोड़ का ऐसे कर सकते हैं. मेरे ख्याल से सोचो, अगर आप में लगता है दम है तो एक बार ऐसे पार्टी दे देते हैं, देखते हैं, बोल देते हैं. नहीं दीपक, हमने अगर पार्टी दे दी और हम 100 करोड़ नहीं कर पाए, तो वही बोल रहा हूँ, अगर तुमने प्री वेडिंग का पार्टी दे दी और शादी नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, कुछ भी हो सकता है ना. तो इन दैट फेथ ओनली यू डू कि हो जाएगा. इन दैट फेथ ओनली वी शुड डू, नो. एंड क्या बोलते हैं, प्री ग्रेटिट्यूड वी हैड, नो, वी शुड हैव प्री सक्सेस सेलिब्रेशन 100 करोड़ क्लब. सो वॉट एवर यू थिंक. मेरे को लगता है मैं इस बार अभी मेरे को 50 करोड़ करना है, 100 करोड़ करना है, 200, 1000, 1200, 1500, 2000 करोड़ करना है, उसका एक पार्टी दे देते पहले. हाउ यू हैव प्री लॉन्च कैंडिडेट आपके पास ही है, एंड वी शुड स्टार्ट विथ हर. क्या मेरे पास क्या है? आपके बाजू में द बेस्ट कैंडिडेट, द फर्स्ट कैंडिडेट तो बाजू में बैठा है, इसलिए तो मैं इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहा हूँ कि दे ही दो पार्टी अभी. क्या है? मेरे बाजू में है और मेरे सामने तो बहुत सारी पार्टी दिख रही है मेरे को. आई एम थिंकिंग दिस होल 24 में बस पार्टी करने वाला हूँ, हर हफ्ते में शायद देता हूँ एक पार्टी. मैं भी देने वाला वेरी सून. गेट रेडी फॉर माय पार्टी. एनीवे, थैंक यू फॉर पुटिंग ऑल दिस थॉट्स. थैंक यू सो मच. हाँ रजनी. Love you so much, Deepak. Love you, Kanchan. Kanchan was always for me was like a happy-go-lucky woman, which just laughs and make people laugh. So today, when you revealed this part of Kanchan, was like, for me it was just a shocker. Trust me, for me, because Kanchan ji इतनी डाउन टू अर्थ है कि कभी ऐसा लगा भी नहीं कि ये कुछ, मतलब मुझे ये पता था कि शी गोज टू ऑफिस एंड वर्क्स विद his husband and son को हेल्प, पर ये खुद से अपना करके कभी भी ऐसा फील नहीं कराया हम लोग को. दिस इज a hats off thing because she's so down to earth. She never spoke anything about all this, but then generally women have this tendency to boast about things or to tell that I am such big. So this is such a lesson for me to learn from Kanchan ji कि इतना डाउन टू अर्थ रह के इतना बड़ा काम कर रही है. So this was such a big lesson to me today. Everything was such profound for me, but this was because this is a general tendency of any human being. अगर कुछ कर रहा है तो वो बोलेगा ही बोलेगा. पर हमने इतनी बार कंचन जी से मिले हैं, कंचन जी ने कभी नहीं बोला कि रजनी this I am doing, that I am doing. So this is a brilliant lesson for me that how to be so grounded doing such beautiful work and the kind of person she is, because वो अपना वो बताती है, पर वो जो सोच उन्होंने बोला कि मेरा ये जो काम है कल को मेरे हस्बैंड और उनके फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो ये गिव मतलब बैक टू द सोसाइटी भी दे के चली जाओ तो इससे बड़ी मुझे
तो इतना बड़ा अंपायर क्रिएट करने के बाद इनका ये जो थॉट प्रोसेस है कि इसको मैं सोसाइटी को ही देके चली जाऊंगी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन दीपक. थैंक यू दीपक फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म to knowing people in your fraternity. Such potential is there, Deepak. Thank you, Deepak. Love you, Deepak. I will love you too. Thank you so much. Love you, Kanchan ji. No, you said it rightly. The more and more you're down to earth, you can go heights. If you are not down to earth, you will never reach heights. The best game that I always liked and it's very inspirational is flying kite, because you are there on ground and holding the thread tight and then letting it go higher, then only the kite goes higher. If you are not on the ground, the kite will come crashing. I think that's how you should have a attitude in life, to be grounded, to be rooted, and have look up like the kite in the sky. And kite flying is the most inspirational game I think I have ever enjoyed, to stay grounded and see the heights you achieve in life. That's how anybody should be. That's what I feel. So thank you for giving that lesson to all of us. Yes, Vidya madam. Love you so much. Love you too. You know, for me, when I see Kanchan, my happiness and smile always doubles. She always smiles, and I feel so excited to see her. You know what I liked about this Baatcheet is, usually when we listen to someone who we don't know, who is somewhere there on the other side, and we listen to their success story and everything, but we see people within like our fraternity, and we see how they grow, and how when you share all these points with us, it feels so nice. It's so inspiration, you know, like one among us who is growing so magnomously just in 2 years. She's grown so much, and so much of inspiration from that. And one more thing, what I liked is like when she said that she can give time for everything. That is what we all face. The difficulty is like, you know, how we give we are not balanced. Like we can give time for this and time for that. So that was very inspiration for me to give time for everything. And she said one more thing, that she feels accomplished. She feels satisfied when she does all this and when she gives time for everything. That was truly inspiration for me. And I would just love to see her work. You know, I never knew that she is such a nice entrepreneur and she does such a wonderful business. I was just thinking she was a musty lady. You know, she'll come and she'll enjoy and she'll go, but she is all rounder, and it's so nice to see her. And and what you discussed also, like she doesn't miss her fitness class or anything. She knows her priorities and she executes it so well. And there's so much to learn from her, so much to see. And I love one more thing, that mirror and that calendar. Don't, both the things are not required. Remove the mirror from your house and calendar from your house. And the calendar, just so. Absolutely. And wow, I felt so nice to listen to her age also. Ah. So think So about, nice. in fact, when she want to come for Fit Spirit, she never misses, you know that. And she also asks her husband to join, and husband does not come. She leaves the husband and come. She does not say, my husband is not coming, he's not allowing me to go, so I also will sit at home. I'm sorry, I feel like coming to Fit Spirit, but I can't come. My husband is holding me back on the knife point, and then that's the reason I'm not able to come. So she leaves the husband only. You don't want to come, you don't come, I am going. So she comes for a Fit Spirit. This is exclusive feedback for Vidya Rantana. Yes, Mamita. Okay, so one more thing is like what I picked up mainly is all of us are one, Did you but pick it's up our what I said thoughts. just now? Yeah, I understood. Okay. That's what you said about the feedback, right? She also, like from your feedback only, she got that right. So I understood. I understood what it is. So on the whole, what I picked up is all of us are same, but it's the thought which make us different. And so how we're going to expand that mental width and everything, it all depends on our thoughts. Thank you so much. Love you so much. Thank you, Kanchan. Thank you so much. Yes, Namita. Happy evening, Deepak and Kanchan ji, and love you khub sara to both of you. Thank you. Kanchan ji, I met you in August in Goa, and
You're such a magnetic personality. Your energy You is met her so in Goa first in time. August. That is important. Top of the world. There you met her. You met her in top of Ah, the world in Goa. Okay, that is more yeah, I important met here. her in. Ah. Yeah, you're right. It could have been Absolutely. anywhere. Correct, very true. The Yeah. beautiful platform that Deepak has created for us, and for this tribe and this community, just comes down to show that what powerful people you have created, yeah, Deepak. All of us, we are growing each day in every way. The holistic growth that you're giving us is incredible. And like Vidya said just a while back, that to see one of us out there talking creates a different impact on us completely. Like फटाफट से वायरिंग में टक 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 चेंजेस होता है, क्या कर रहे हो, चलो चलो काम पे लगो. So Kanchan ji, I have to say, you're super inspiring and so warm, so loving. You don't have to be like someone like arrogant and rude and attitude and whatever to be successful, to be what to achieve the way you have achieved is incredible. I really hope and pray that Deepak touches more lives like these, to be givers, to grow while giving, which is a beautiful thing. And I totally relate. I believe very strongly, and I personally want to be. So my entrepreneurship has begun recently, and I always thought कि यार इतने लेट चालू किया है लाइफ में, इतने लेट चालू किया है, पर आपको देख के ऐसा लगता है हाँ इट्स ओके. मैं तो मतलब मुझे तो सीखना है, मुझे तो फील करना है. You're only 20 only. मैं इतना क्या गड़बड़ कर रही हूँ? Yeah, exactly. मतलब क्या सोचना है इतना? You are amazing, Kanchan, and this whole thing, Deepak, this journey of her growth, your influence, the way she's taken from zero to where she is in such short span of time gives so much hope and power. We always think, okay, of course, we break down everything each day as it comes, but seeing this kind of result in short span of time gives us a lot of hope and makes us think that it is possible and how we should do it. We need to figure that out. But Kanchan, it's amazing. I love sitting next to you. I love learning from you. Being a married woman, of course, you always have so many things. But yes, you rightly said कि you don't have to think कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ. You just have to do it. वो उस थॉट को साइड में रखो. वो सीधी सारी चीजें करनी है. मैनेज में तो होती रहेगी, करते रहेगी, और वो करते करते हंसते खेलते बहुत सारा कुछ करना है. लोगों की जिंदगियां बदलनी है. I personally, while I wanted to do business always, and I got into it not too long ago. But yes, even I want to do that. Build your community, add value to people's lives while you're creating your own, empire and doing your own, fulfilling your own dreams. And you're absolute like the person among the stars who sits right next to me in the business program. And I love learning from you. I was so inspired at the first time itself in top of the world Goa to know that what all you're doing, and so much of energy you have so much love for all of us. जब चाहो आप 20 साल के हो जाते हो, जब चाहो आप एक एज हो जाते हो जहाँ हमको समझाते हो, हमको सुनते हो. It's amazing. Just love you lots. And आज का सेशन truly inspiring था. मुझे ऐसे बार बार सुनने का मन कर रहा है. इतना अच्छा लगा. And I learned a lot. And you gave me also a lot of hope and power in this juncture of my life. Thank you so much. Love you, Khoob Sara, to both of you. And Kanchanji, I'm loving you even more and more each day. And I'm waiting to see you again in Bangalore, both of you. Thank you so much. Love you so much. Kike. Happy evening, Deepak. Loving you so much. Welcome. Good evening, Kanchan auntie. Like today is that I read कि Kanchan auntie's interview will be happening. Just first thing, whenever I just recall about Kanchan auntie, is just like वो एकदम इतना प्यार देते, the love, हाँ कैसे फंसे थे अपन कैसे so beautiful. Like so much of love she gives, and I also remember multiple times, like a few years ago, like पापा को ऐसे बोलते हैं भैया भैया भैया, and that raw love जो बोलते हैं ना, in few seconds she can just win the hearts, and she'll just love you so much, and there's so much of warmth. That is like next level. I just love that feeling, just staying around you. And I guess I don't interact that much also, but once in a while if I meet her also, that coziness, that comfortness है कि
somebody elder is there and you just feel that comfort, like homely vibe. वो बहुत मस्त लगता है. Love you so much for that. And today I just got to know that you're an entrepreneur also and you work so much. That was just a superb insight. Like that was like एक untouched party था कि हाँ कंचन आंटी ऐसे भी कर सकते हैं कि next level. And I would love to just see you कि आप कैसे प्यार से काम करवाते हैं. I've seen many people in the market कि डांट के काम करवाते हैं, but आप कैसे करवाते हो? Given I want to learn that beautiful art of communication, and looking forward for tremendous growth for you. I wish you loads of growth and abundance for you. And I love you so much. And the way I've also seen your son, the way he works, and that simplicity and that calmness is so beautiful. I guess it's all because of like over se niche. I guess it's all gone from you, that conditioning. And it was just lovely. Thank you so much, Deepak sir, for this beautiful insight. It was just like एक कहते हैं खजाना हमको हर बार मिलता है आपका हर एक any program, and this was some hidden gem जो कंचन आंटी को we could experience, all of us, and witness everybody. And thank you so much, Deepak sir. Love you so much. Thank you so much, Kanchan aunty, for everything. Happy night, everybody. Love you so much. Love you too. Thank you guys, and thank you for it was a wonderful uncommon story of a common woman. And it's not about who you are, it's about how you live your life that makes you who actually you are in life. So I think it's wonderful. So stay connected for many more some amazing uncommon stories of some common people, mind-blowing, extraordinary lives that people live in a very ordinary way, but it makes it look very extraordinary. So look forward for many more to come on this Thursday on Sampurna. Stay connected and get more people connected. Love you so much. Thank you so much. Have a happy night. Thank you, Kanchan. Thank you so much.